नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध, आप सभी का द सिविल गुरुजी एंड स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में विद अ वेरी शॉर्ट yet important video for all of you people where I'm going to discuss about the branch wise or I should say the paper wise basically number of vacancies versus the number of applications that we have actually received so that you can know the actual competition that you are going to face on the day of the examination. Before we proceed, it's my humble request to all of you people to hit the like button, share the video with all the other people. And if you're new to this channel, hit the subscribe button and notification bell icon so that every time I post a new video, you get the notification. तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना के दिए आपके लिए. तो सिविल में as we know that vacancy is 178 and number of applications is 48,414. तो आप समझ ही रहे हो कि एक सीट के लिए बेसिकली जो है आप लोग 272 people almost are actually fighting for a single seat. Similarly, if I talk about electrical में definitely 221 vacancies are there and there are 38,255 applications that we have received. That means 173 almost applications are there per seat. ओके मैकेनिकल के लिए मैं अगर बात करूं तो 38,778 एप्लीकेशंस रिसीव हुआ है फॉर 145 पोस्ट. दैट मींस 267 ऑलमोस्ट एप्लीकेशंस पर सीट. सिस्टम में तो भाई आप देख रहे हो कि सिस्टम फाड़ दिए सब. तो 43 पोस्ट के लिए भाई जो अप्लाई किए 42,673 मतलब लगभग लगभग 1000 लोग एक सीट के लिए लड़ेंगे. 993 पीपल यू आर गेटिंग. Similar is the case almost for electronics and communication में भी अच्छा खासा है but obviously not as much as system क्योंकि system में सब CS वाले हैं. तो आप समझ रहे हो CS IT and all these people are going to apply. वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 459 पीपल आर गोइंग टू बी फाइटिंग फॉर अ सीट. जियोलॉजी में काफी कमी है. 6,108 पीपल आर फाइटिंग फॉर 15 सीट्स. दैट मींस इसमें भी काफी ज्यादा है एक्चुअली. 407 people will be fighting for a seat. Industrial engineering में 837 applications have been received for 11 seats. मतलब लगभग एक सीट के लिए 76 people will be fighting. राजभाषा है यानी कि हिंदी के लिए एक्चुअली टोटल 5 seats are there and 855 number of applications have been received. That means 171 applicants per seat. They will be fighting for one seat. And for company secretary post, 285 applications has been received for 4 posts. That means almost 71 people will be fighting to snatch one particular post. So definitely don't get frightened. Okay, this the whole purpose of this video is not to make you frightened, just to make you aware of this competition so that whatever time is left, you feel like that only a few moment is left. ऐसे सोचो कि यार बहुत ही कम टाइम बाकी. तो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर योर सेल्फ. यू कैन ज्वाइन आवर क्रैश कोर्सेस. एक्चुअली जो पेपर 1 है उसमें हमने एप्टी के साथ साथ मैथमेटिक्स को भी इंक्लूड कर दिया. दैट इज फॉर ऑल द पीपल. क्योंकि सारे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को रखा गया है इसीलिए. तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ. एंड पेपर 2 इज एक्सक्लूसिवली फॉर सिविल इंजीनियरिंग. सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएगा. एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. वहां पे भी एवरी ऑल्टरनेट डे आई विल बी कमिंग लाइव विद expected questions. So thank you, take care, and definitely don't forget to hit the notification bell icon. कोई भी आपका सवाल है तो आप जरूर जरूर मुझसे पूछ सकते हैं.